Good afternoon, everyone. I hope you can hear me and see me. Call me zero hoga. We'll try our best. I hope you all booked a good profit in the morning session as well as in the yesterday morning session and in the commodity expiry session. Waiting for zero allotted one lot. Congratulations, Arshad ji. At least आपको allotted हुआ. Anyone got वारे IPOs? Guys, feel free to reply to this query. 80 के लॉस इन सेंसेक्स कॉल एक बार भी रिकवर नहीं कर पाया मार्केट ले. We will try our best. Looking exhausted, I am not feeling that well. Is that I guess it's the weather. Let's just wait for research team to join in, and then we are good to go. आज किंग नहीं आ रहे हैं. आज ऐसा आपने पोस्टर देखा होगा. आज हमारे पास है मिस्टर निकुंज पाटवा. निकुंज सर, can you hear me? Yes. Audible. We will take a minute to settle down. तब तक आप स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकते हैं. ठीक है. Fine. फ्राइडे और वेडनेसडे को लो क्वांटिटी से ट्रेड करो. सर, वारे IPO रिजल्ट आउट. Yes, Amulji ji, वारे रिजल्ट IPO is out. So good afternoon, everyone. Welcome to the Sensex Expiry and the last session for the week. We have our expert Mr. Nikunj Patwa with us, hoping for a profitable trade. Sir, काफी pressure है. Weekend है, दिवाली आ रही है. I hope we get a good trade. And at the same time, congratulations those जिनको वारे IPO मिला है. जिनको नहीं मिला, better luck next time. That is the only thing which I can say in case of IPOs. And also for the people joining in for the first time, morning session हमारा stocks के around focus करता है. Afternoon session focuses around derivatives. अगर time रहा हमारे पास market sideways है, कोई momentum नहीं है, then we'll take up the stock queries. I can see questions coming up कि चंदन सर कब आएंगे. guys, चंदन सर आपको सीधा दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पे दिखेंगे शाम को. So don't worry, just sit tight and let's wait for Diwali. I am new, joined today. Sundara ji, welcome. Welcome to the community. Because sir, we are all set. You can turn on your camera, turn on your mic, and we are good to go. Yeah. So my screen is visible, right? Yes, sir. Perfect. So good afternoon, everyone. Welcome to the last expiry of the week. That is the Sensex expiry. जो usually मधुर भाई लेते हैं, but he's not there, so I'm taking it. And start करते हैं first निफ्टी से. निफ्टी relentless selling देख रही है हम सुबह से. From the opening day, it has not been able to at least even bounce 30-40 पॉइंट का भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है निफ्टी. सो बेयर ग्रिप में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ है, जो आई थिंक वी हैव बीन कंटिन्यूअसली सेइंग फ्रॉम लास्ट 3-4 सेशंस. 24,750 क्रूशल था, वहां से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की एक मंदी देखी गई है. निफ्टी नीचे में अभी 23,800 इज वेरी वेरी क्रूशल. 23,800 800 के आसपास. इट इज वेरी क्रूशल फॉर निफ्टी टू होल्ड दैट. अगर वो नहीं होता है तो और करेक्टिव मूव आ सकता है निफ्टी में. ऊपर में 24,500 और 24,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है इन निफ्टी. फॉर द वीक इट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 2.12% इन निफ्टी. निफ्टी बैंक जो कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा था, दैट वी वर सेइंग कि आउट परफॉर्म कर रहा है और माइल्डली आउट परफॉर्म कर रहा है, बट आज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी. 2% mainly to do थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ इंडसइंड बैंक जो ऑलमोस्ट 70 to 18% लोअर है, which has hindered the other small banks and even the larger private major banks. तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट लोअर है बैंक निफ्टी. और 51,000 जो अपना स्विंग लो था, लास्ट फ्राइडे का लो था जहाँ से एक रिवर्सल आया था, उसके नीचे आज क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली. सो और 500 पॉइंट वहां से घट गया है. अभी मैजिक का नंबर है 50,000, जो 7 अक्टूबर को लो किया था. दैट वाज 50,190. सो 50,000 इज अ राउंड फिगर आई एम सेइंग. अगर 50,000 के नीचे क्लोज आता है तो और 1,500 पॉइंट्स का करेक्शन देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड क्लोजिंग बिलो 50,000. और रिवर्सल इज ओनली एक्सपेक्टेड अबव 51,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक
रिवर्सल की तरफ देख सकते हैं. But as of now, it is a sell on bounce stance. And even Sensex की बात करें जिसकी आज expiry है, तो the index itself is trading almost the VWAP is the weekly VWAP is 81,500. So currently it is 79,170. So almost 2,000 point 2-3,000 point नीचे है अपने VWAP से, which is clearly indicating that bearish grip है. And हमारा stance भी for the last hour भी negative ही रहेगा. So the put option that we are working and tracking is 79,300 put. So the 79,300 put जो slightly in the money है, तो मैं उसका levels अभी फिलहाल 127 है. तो जो levels हमारी entry point बन सकती है for the last 15-20 minutes जो अपना session है उसके लिए. Yes, current market price is 126. What we can do is we'll buy this 79,300 put option between 95 to 105. So अभी 128 है, तो we'll buy between 95 to 105. अगर levels change करने का रहेगा तो definitely intervene. We'll keep a stop of 58 and look for 160 and 190 on the higher side in this put option. So trade again, I'll repeat, 79,300 का Sensex BSX का put option will buy between 95 to 105 and keeping a stop of 55, and we'll look for 160 and 190 on the higher side. So this is the trade setup that we are working with currently, and I've also had it on my screen. So 130 और चल रहा है अभी, so we'll buy between 95 to 105. अगर levels change रहेगा, we'll definitely intervene and tell you कि कैसे क्या करना है. But as of now, this is the levels that we are working with. अगर aggressively जाना होगा, लग रहा है कि और जोर से मंदी हो सकता है, we'll buy at CMP if the need be. So as of now, these are the levels we are working with. 95 to 105. You keep a stop of 55 and look for 160 and 190 on the high side. I hope Anuj, the levels are clear. Yes, sir. And also, sir, we have Balwinder ji, जिन्होंने 110 पर buy किया है, तो should he book profit or should he wait? He should wait, I think. 110 पर buy किया तो he should wait. Got it, sir. Yeah. Sir, we are getting a lot of questions on वारे IPO की मिला है, क्या करें अभी, profit book करना, should we hold? See, IPOs तो I don't know. I think अगर सिर्फ IPO listing gain के लिए है तो they should definitely book out. अगर नहीं है तो I think they should hold. There's no problem with the company as such, but given the market scenario जो फिलहाल एकदम bear grip में है, तो थोड़ा सा I think advisable रहेगा that they should, अगर long term के लिए है 3-5 years, तो they should not worry at all. अगर लिस्टिंग गेन, अगर पर्पस आपका पर्पस ही लिस्टिंग गेन था, तो अगर गेन है तो यू शुड डेफिनेटली बुक आउट. Got it, sir. And also, जैसा कि स्नेहा मैम ने कहा था हमारे IPO सेशन में, it's good to hold it for long term. I'll just add that to what Nikon sir was saying. Yeah. And the persons क्या पर्पस से आपने लिया है. So also, sir, what will be the stocks on radar for BTST? BTST, I think थोड़ा सा will wait, but I think one stock that has been looking good ever since even as quarterly numbers अच्छा announce किया है, that is BEL. So I think एक base formation तो हो रहा है नीचे से. I'll just check the charts. Yes, एक stock है BEL. I think they should consider BEL as a BTST. I think 268 odd है, तो 268 to 269 we can buy between this level, and keeping a stop of 262, they can look for 280 on the higher side. So BL एक अच्छा सेटअप है, अच्छे बुलिश रिवर्सल दिख रहा है, हैमर पैटर्न बन रहा है डेली में, इवन वीकली में it has shown a good recovery. The company has also announced a good and healthy results. So I think this is a stock that you can take it as a BTST. Got it, sir. Yeah. So guys, we have initiated 2 trades. One is the Sensex expiry trade, 79,300 put, buying at 95 to 105. It's trading right now at 128. Yes. Stop loss 55, target 160 to 190. And then we have another trade that is BTST, BEL, BEL. Not some people consider BEL and BEL for a confusion. So BEL,
Buying at 268, stop loss 262, target is 280. Yes. Perfect. Bharat Electronics. Perfect. सर दिवाली पे आई नो कि हम बास्केट रिलीज कर रहे हैं एंड यू नो नॉट स्पॉइलिंग और गिविंग एनी स्पॉयलर्स बट कौन से सेगमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए I फेस्टिव सीजन में? think festivity say I think Zomato is one stock that is being a favorite of ours. So I think Zomato is certainly one stock that you should definitely have in your portfolio. So I think Zomato is one stock you should definitely have it at least 4-5 years का अगर time horizon है तो it can give you magical returns. So Zomato is one stock that you should definitely have in your portfolio. Sorry, I was speaking on mute. I'm back. So, yeah. So I think I said Zomato. Zomato one should definitely have in your portfolio. It's a perfect stock, a new age stock, and I think it will do wonders for next 5 years, 3-5 years. नारायण जी लिख रहे हैं जोमेटो लास्ट मंथ स्विंग में 5 लाख रिटर्न दे दिया है सुपर स्टॉक. I think every 10 to 15 rupee correction is being bought into. So I think smart players can play accordingly in Zomato. अगर ट्रेडिंग के लिए भी कर रहे तो इट्स अ गुड ट्रेडिंग स्टॉक, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ले तो इट्स अ डेफिनेटली मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो. करेक्ट सर. सर योर सर स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? स्विंग ट्रेड इज बेसिकली अलग मल्टी टाइम फ्रेम पे हम लोग जो यूजुअली जो कॉल्स देते हैं लास्ट आवर के लिए, दो द स्विंग ट्रेड्स. सो इफ यू सी जोमेटो, अगर मैं बताऊं तो आई क्विकली शो. अच्छा जोमेटो, तो एवरी स्मॉल डिप इज व्हाट. सो अगर डेली स्केल पे और वीकली स्केल पे जो स्टॉक पॉजिटिव है ना, तो उसका आर्ली और एटलीस्ट 2 आर्ली चार्ट पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं. बेसिकली बाय एट सपोर्ट. जैसे कि अगर डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है तो आर्ली में जाके व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लुक फॉर सपोर्ट्स जहाँ से प्रीवियस बाउंस बैक कर रहा था स्टॉक, तो वी कैन एंटर इनटू दैट. जैसे अभी 251 है तो कल भी सिमिलर लो किया था आफ्टर रिजल्ट्स. तो आई थिंक जैसे 241 का लो किया था तो अभी 250 है, तो आज भी देखेंगे तो 243 का लो करके वापस बाउंस बैक हुआ है. सो वेयर यू कैन बाय नियर सपोर्ट एंड यू कैन सेल एट थोड़ा सा ऊपर में, तो ये 8 to 10 पॉइंट्स का एक स्विंग ट्रेड यू कैन लुक इनटू इट. I'll quickly come back to our trade. I think it has initiated. Okay, it has made a low of 104. So our trade is active. अपना प्राइस था 95 से 105, made a low of 104.8. So 79 300 का पुट हमारा बाय ट्रिगर हो गया है. We'll maintain a stop of 55 and look for 160 and 190 on the high side. So we'll focus on the trade as of now. So just to repeat, our trade is active. Our trading range was 95 to 105 and made a low of 105, 4.8 something. So वहाँ से एक छोटा सा bounce back आया है. So and we'll keep a stop of 55 and look for 160 and 190 on the higher side. And जिनको एंट्री नहीं मिली थी I guess they can enter now. They must have entered. Yeah, I think it is at our buying price only here, buying range only. So, Correct. It again made a low of 104.95. I guess अब एंटर हो गया होगा जिन लोगों का एंटर तब नहीं हुआ. definitely. So if you can open the strike on the screen. Yeah, just a moment. Yes. So 113 अभी है. Right, 106
95 to 105 was our buying range that we had indicated. We'll keep a stop of 55 and throw swings fast there, so you'll be mindful of that and do accordingly. But as of now, our trade is active. The reason why we are on the bearish side is basically it was trading below the weekly VWAP, and also the last almost for the week the index is down almost 6-7%. So their grip may, so which is why we have been with the put option, and our range was 95 to 105. So as of now, it is quoting at 80, 82. So and our stop is 55. So be mindful of that. As of now, our stop is not triggered, so our trade is active. And the kind of capitulation we are seeing in stocks for today, it has been very nerve-wracking, and even FIs have been relentlessly selling almost 1 lakh crore. They have sold 1 lakh crore ka cash market. They have been selling for this month of October, and it is the highest. Even COVID के time पे इतना selling नहीं था. So I think एक रो प्ले भी कर रहा है in the market sentiment, and Nifty almost 24,000 के आसपास आ गए. थोड़ा सा negative sentiment continue रहेगा in the markets. So our stop is at 55, so be mindful of that. And our buying range was 95 to 105. So our strike is 79,300 ka put option. As of now, it has made a low of 70. Yes, we are not taking any stock queries because we are tracking the trade right now. Yes. नीचे 70 हुआ था, वहां से वापस 91 का टिक करके 80. So swings are very quick, and be mindful of the stop loss, please. So because can give a sharp move either side. Bias is negative, so we have gone with the put option. Even FIs जो मैं बोल रहा था कि almost 1 lakh crore का cash market में selling है, so that is sentimentally denting, and it is showing in the price correction and the stock correction. The market breadth, almost last हफ्ते की market breadth, if we see, it is almost 1:8 for everyone advancing, the 8 stocks decline. So that is the main reason why we have seen strong correction in the market. Our option currently at 73. Our buying range was 95 to 105. So Sensex has rallied नीचे से almost 80-90 points. 79,180 था when we started the session, and now 79,250 है the spot Sensex. So the option made a low of 56.55. Stop is 55, so be mindful of that. I made a low of 55, so I think our stop has got hit. So our please exit the trade 79,300 put ESX. Our stop was 55, and you need to exit the trade because the stop has hit. So Sensex BSX का 79,300 put option जो हमारा stop था वो hit हो गया है. So kindly exit the trade. So can we expect any other trade? I'll see अगर work करता हूँ
I think if we have 7-8 minutes, तो अगर कुछ रहेगा तो I'll definitely come across and tell. Guys, we are trying our best. Let's give our expert some time to analyze. Yes. One stock that we have shared is BEL, so you can look into that. BEL to BTST. So that should do good for you. So I think in the meantime we can take few queries अगर है तो, because I think I'm working on the trade. अगर कुछ रहेगा तो I'll definitely come across. Sure. So रेल विकास लिमिटेड का शेयर 535 रुपीस पर खरीदा है और अभी 418 है. What to do? Just a moment. I think stock करेक्ट तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अब अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आ गया है. तो प्रीवियस डिमांड जोन था 400 और 380 और 400 के आसपास. तो आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन टू योर पोजीशन इन आरबीएल. अगर आपको आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन टू योर पोजीशन. अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आई थिंक यू कैन टेक कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 390. Sir, your view on BDL? BDL has given a fresh breakdown, almost 4% नीचे है, तो और करेक्ट हो सकता है थोड़ा सा. ऑलमोस्ट 1000 के पास है. 980 और 950 के आसपास भी आ सकता है BDL. सो आई थिंक बेटर एंट्री पॉइंट इज 950 980. अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 980 एंड होल्ड ऑन टू इट. Sir, SGBN? SGBN has given a breakdown, but अपने previous demand zone जो 100 था, जो election sorry not election, it has broken the election outcome वाला low. So and नीचे में अभी fresh support comes at 100. तो अगर 100 के नीचे क्लोज होता है तो और करेक्ट हो सकता है towards 95 to 92 levels. तो अगर 100 होल्ड करता है तो आप एक बाउंड बैक towards 110 120 आ सकता है. Sir, IRB bought at 63.19. और एंट्री तो थोड़ा ऊपर के लेवल का है, बट the stock has been correcting. So I think the last support for the timing comes at 49.5. अगर 49.5 ब्रेक करता है तो और 45 की तरफ भी जा सकता है. So I think sell on price kind of अगर ऊपर बाउंस आता है तो you should exit from this. Sir, Suzlon? So as we have been mentioning, 64 or 64.5 to say 65. 65 एक crucial support है. 64.65. तो 64 से 65 का लेवल वेरी important है. अगर वो ब्रेक करता है तो I think it could correct to another 5-7%. तो अगर 65 ब्रेक करता है तो अगर आपका लॉन्ग है तो you should exit and look for better entry point नीचे की तरफ. अगर ऊपर में 70 निकल जाता है तो वापस 75 की तरफ जा सकता है. So your view on Maruti? Maruti has been correcting post its the what is it, breakdown of 12,000. 12,000 के नीचे क्लोज हुआ है. वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट घट चुका है. नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट कम्स इन एट 11,200 11,000. So
these are the support levels that you can work with. अगर 11,000 के नीचे close आते हैं तो और correct हो सकता है towards 10,500 also. So be mindful of 11,000 levels. 11,200 के support से hold. So review on Excite. So Excite is also corrected with the market correction and the broader market correction. So Excite का 430 and 425 एक very crucial support है. अगर वो break करेगा तो और correct हो सकता है. I think for trading positions, be mindful of the stops and please trade with a strict stop loss because the stop can erode your capital very quickly. So adjust even as you have seen आज IndusInd Bank हल्का सा wrong results and the stock is down 20%. So even Dixon for that matter, the stock gave a good result, but it is down. It was down at one point almost 13%. So stock make capitulation both fast and is very high. So be mindful of your trading position and keep a strict stop loss. Do be 1%, 2% as per your risk appetite, but be mindful of your stop and please honor your stop. Otherwise, it will erode your capital very quickly. So Excite की बात करें तो वापस 480, 430 and 425 are good support zone. ऊपर में 460 and 465 is the resistance zone. So 430 जब तक hold करें, bounce towards 460 cannot be ruled out. So your view on IndusInd Bank, can we enter at the current levels? No, I think best avoid it. And over the weekend on the Saturday, ICICI Bank का भी result है, which has a good weightage in BankNifty. So be mindful of that also. अगर आपका position है long position है तो please hedge your position and take it forward. अगर आपको carry forward trade करना है तो. Sir, Vasco Engineering bought at 75 and this will be the last query for the day. Vasco Engineers. Okay, Vasco Engineers. स्टॉक तो एक बेरिश ट्रेंड में ही है. वीकली स्केल पे भी इट हैज मेकिंग लोअर टॉप्स. इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन एट 55 के नीचे ऑलमोस्ट 10% तो करेक्ट हो गया है और वी कैन सी करेक्शन टुवर्ड्स 45 लेवल्स. सो आई थिंक आपका पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप ऑफ 50 एंड होल्ड. अगर 50 ब्रेक करेगा तो 45 विल डेफिनेटली सी. So that will be all for the day, guys. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you, Nipun sir. And we'll try our best to recover the losses in the next sessions. Definitely. Thank you everyone and have a good day and good weekend. Thank you everyone. Sure.